कंप्लीट कर पाए। और आज डे 1 है जिसमें हम अपने एनसीईआरटी को कम्प्लीटली कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर और लेट्स स्टार्ट। क्योंकि अगले टेस्ट में हमारा यहीं से आ रहा है ये जब, इसलिए हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मजा आएगा, मजा आएगा। कि एनिमल्स एक्यूमुलेट्स अमोनिया। जो एनिमल्स होते हैं वो निकालते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू निकालते हैं? तुम्हारे लंग्स के थ्रू। एक दिन में कितना निकालते हैं? 100 में कार्बन डाइऑक्साइड 200 ml पर डे। 200 ml पर डे, 200 ml पर मिनट होता है। 200 ml पर मिनट होता है। वहीं पे वाटर का भी सिक्रेशन लंग्स करता है। तो वाटर का सिक्रेशन तुम्हारा लंग्स करता है, कितना करता है? 100 ml पर डे। 100 ml पर डे ये भी करते हैं। एंड आयनिक्स, बहुत सारे आयन्स हम जो हमारे लिए आवश्यक है उसका तो संग्रह करेंगे बट जो आवश्यक नहीं है उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं। जैसे कि अमोनिया, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू निकाला जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा लंग्स के थ्रू निकलता है। कितना इसमें अमाउंट दे रखा है, कितना निकाला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है तुम्हारा 200 ml पर मिनट। 200 ml पर मिनट ये निकाला जाता है। वहीं पे लंग्स जो प्रेजेंट होता है वो 100 ml पर डे किसका सिक्रेशन करता है? वाटर का सिक्रेशन करता है। और कुछ आयन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि Na प्लस, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे आयन्स भी बॉडी से सिक्रेट किए जाते हैं आइदर बाय मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़। या तो ये सारे आयन जो सिक्रेशन किए जा रहे हैं, ये सारे आयन्स जो प्रेजेंट हैं, या तो ये मेटाबॉलिज्म जो हमारी उपापचयी प्रक्रिया है उसके द्वारा इनका सिक्रेशन किया गया, और बाय मीन्स लाइक एक्सेस अमाउंट। हम कोई भी चीज़ को बाहर कब निकालते हैं? या तो उसका अवशोषण हो गया और जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकाला जाए, या फिर हम वो पदार्थ को भी निकाल सकते हैं जो कि हमने एक्सेस अमाउंट में लिया है, तो उसको भी निकालना क्या करता है? excretion. Not only metabolism process but it was a means like a excess amount of inhibit करने के थ्रू भी इसको निकाला जाता है। this substance have to be removed totally or partially। क्या हम जितने भी एक्सक्रीटरी पदार्थ में वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं उनका टोटली एक्सक्रीशन कर देते हैं? नहीं, उनका टोटली एक्सक्रीशन नहीं किया जाता है। या तो टोटली करते हैं या पार्सली, ओनली टोटली। दिस सब्सटेंस हैव टू रिमूव टोटली ना, हम टोटली रिमूव कर ही नहीं सकते क्योंकि जो भी कुछ आयन्स प्रेजेंट है उनका हमारे बॉडी में कुछ न कुछ मात्रा भी आवश्यक है। इसे दो पॉइंट में ना पहला क्वेश्चन ये क्या हम अपने वेस्ट मटेरियल्स का टोटली एक्सक्रीशन कर सकते थे? तो नहीं, टोटली एक्सक्रीशन नहीं करते हैं, बल्कि टोटली और पार्सली एक्सक्रीशन करते हैं। क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ओनली फॉर्म्स ऑफ मेटाबॉलिज्म? नो, नॉट ओनली फॉर्म मेटाबॉलिज्म, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सेस अमाउंट ऑफ इनहेल। एक्सेस अमाउंट में किसी पदार्थों को अगर ले लेते हैं तो उसके थ्रू ये भी होता है। In this chapter we learn to mechanism of eliminations of these substances with specifically emphasis of common nitrogen waste, जो कि हमें कॉमन जो एक्सक्रीट करने वाले एक्सक्रीट पदार्थ
होते हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। एनिमल सबसे ज़्यादा किस रूप में नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में अपने पदार्थों को बाहर निकालते हैं। एंड अमोनिया इज द मोर टॉक्सिक एंड रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर एलिमिनेशन। सो वहीं पे यूरिया, यूरिक एसिड being the least toxic and can be removed with minimum loss of water present होता है। वहीं पे the process of excreting, जो प्रोसेस होता है ऑफ एक्सक्रीटिंग का अमोनिया, अमोनिया के उत्सर्जन का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अमोनिया टैलिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमाउंट ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमोनियोटैलिज्म। मनी बॉडी फिश, इसका एग्जाम्पल है ये अमोनिया टैलिक होता है जो कि बॉडी सरफेस या लेंस के थ्रू, बॉडी सरफेस और गिल्स के थ्रू अपने पदार्थ को उसको उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन मैंने देखा था मेनली देखा जाता है बोनी फिश में। बोनी फिश को बोलते हैं ऑस्ट्रोथाइस। ऑस्ट्रोथाइस में बोनी फिश का नाम किस मछली में होता है ऑस्ट्रोथाइस में प्रेजेंट होता है। वहीं पे एक्वाटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्टा, एक्वाटिक इंसेक्टा इज known as ammoniotelic natures. Ammonia as it is readily soluble, readily पूरी तरह से अमोनिया एज इट इज readily soluble होते हैं एंड इट्स जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजल्स, जो मुख्य रूप से डिफ्यूज हो जाती है अक्रॉस द बॉडी सरफेस या थ्रू गिल्स लंग्स। फर्स्ट गिल्स इन फिशेज एज अमोनिया आयंस, अमोनियम आयंस के रूप में। वही जो किडनी होती है डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंस रोल इन टू रिमूवल, परंतु जो किडनी होती है अमोनिया टैलिक जैसे जीवों में यूरिया के उत्सर्जन के लिए कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती, बट उनमें किडनी प्रेजेंट होती है। रोल प्ले नहीं करते जिसका मतलब किडनी नहीं होता, किडनी प्रेजेंट होती है बट वो कोई सिग्निफिकेंट रोल मतलब सिग्निफिकेंट रोल उसका कोई नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे हम वाटर से एज अ लैंड पे आए तो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन होगा, तो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन के कारण जो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन होता है इज नेसेसिटेड द प्रोडक्ट्स ऑफ लेजर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट। जब हम टेरेस्ट्रियल पे आए तो हमें वाटर की मतलब कमी हुई, तो कमी होने के कारण हमने अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में अपडेट कर लिया, मतलब मॉडिफाई कर लिया या एडाप्टेशन कर लिया, जिसके कारण हमें अब वाटर की कम ज़रूरत पड़ी। अब वाटर की कम ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको लेस टॉक्सिक बना दिया, और लेस टॉक्सिक बनाने के कारण टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन नेसेसिटेट द प्रोडक्शंस ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन waste like urea, uric acid, lesser toxic nitrogen waste like urea and uric acids, conversations of water जो कि वाटर के कन्वर्सेशन से होते हैं। मैमल्स मेन जो कि मैमल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेनी टेरेस्ट्रियल एडाप्टिव एम्फीबियंस एंड टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन में जो मैमल होते हैं एम्फीबियन होते हैं, मरीन फिश प्रेजेंट होते हैं, मेनली एक्सक्रीटेड यूरिया एज कॉल्ड यूरियोटेलिक अमोनिया प्रोडक्ट बाय, जो अमोनिया प्रोडक्ट बाय मेटाबॉलिज्म कन्वर्ट्स इनटू अमोनिया किसमें चेंज होगी, अब यूरिया में चेंज होगी। यूरिया में कैसे चेंज होती है, लीवर्स के थ्रू। लीवर्स में एक हेपेटिक वेंस प्रेजेंट होती है, उसमें यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और किडनी पे रीनल वेंस प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है। मेटाबॉलिक इज कन्वर्शन यूरिया इनटू लीवर, किसमें करती है, लीवर में। यूरिया अमोनिया ट्रांसफर हुआ, अमोनिया का ट्रांसफर को यूरिया में कौन करता है, लीवर करती है। ठीक है, एंड दिस animals and are released into the body. It's filtrates and excreted out by the kidney से हो जाता है। किडनी में यूरिया की मात्रा मतलब
कम होती है, एज लेस टॉक्सिक देन द लीवर, क्योंकि लीवर पर भी उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पे उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द किडनी। किडनी के थ्रू अपनी सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निष्कासित कर सकते हैं। कौन करते हैं? तुम्हारे यूरोटेली एंड यूरिकोटेली। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix। क्या हम सभी जितने भी यूरिया प्रेजेंट होते हैं उन सबको बाहर निकाल देते हैं? नहीं, क्योंकि सम अमाउंट्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, किडनी के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है, जिससे तुम कहते हो कि वो सारी प्रोसेस बैलेंस होती है। सम ऑफ दिस एनिमल टू मेंटेनेंस ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी कलेक्टिंग डक्ट से कंडीशनल ऑब्जर्वेशन करके वो सारी यूरिया बाहर निकालती है, और बाहर निकालने के बाद कहाँ इंटरस्टिशियल मीडियम में भेज देती है, जिसके कारण बॉडी में आयनिक इक्विलिब्रियम बना रहता है, ऑस्मोलैरिटी बनी रहती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर वो पूछे क्या बॉडी से सारे यूरिया को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है? तो नहीं, सारे यूरिया को हम बाहर नहीं निकाल सकते, बट कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया हम किडनी में रहता है जो कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करती है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट। कौन कौन सा? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल, reptile, birds, land snake is the best of nitrogen based to uric acid. Nitrogen based has uric acid in the forms of pellet. It's a form of pellet या पेस्ट के रूप में with the maintaining uses of water and its carbon element Eurotype and survives of any kingdoms or survives of any kingdom। अगर हम किसी किंगडम में सर्वाइव करते हैं, और वैराइटीज ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, अगर हम किसी भी अलग अलग किंगडम में जाएं तो वहाँ पे हमें अलग अलग एक्सक्रीटरी सबस्टेंस मतलब एक्सक्रीटरी मिलते हैं। जैसे कि हम मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेटा दिस स्ट्रक्चर इज अ सिंपल ट्यूबुलर्स। जैसे कि हम इनवर्टिब्रेट को देखते हैं, तो इनवर्टिब्रेट में सिंपल स्ट्रक्चर इनवर्टिब्रेट में जो हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलता है वो कैसा होता है? सिंपल ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बट वहीं पे अगर हम जाते हैं टू द वर्टिब्रेट, invertebrate we found have a complex tubular organ called kidney. We known as the kidney is the complex tubular organ. Yes, some of these structures are maintains here। और जो किडनी होती है यही बॉडी को मेंटेन भी करती है। जैसे कि हम अगर डिफरेंट इनवर्टिब्रेट में देखें तो डिफरेंट स्ट्रक्चर में लेते हैं, तो जैसे मैं एग्जांपल भी तो जरूरी है ना। इसका एग्जांपल हो जाता है प्रोटोनेफ्रेडिया। प्रोटोनेफ्रेडिया जिसको हम फ्लैम से भी कहते हैं, ये पाया कहाँ जाता है? तो ये मिलता है तुम्हारा प्लेटियल मेंथीस में, प्रोटोनेफ्रिया सेफेलोकॉर्डेटा में, और आता है तुम्हारा रोटिफर सेफेलोकॉर्डेटा, रोटिफर, सम एनालिड्स में प्रेजेंट होता है, एम्फैक्सिमा में। ये सारे ये जो हमने बताए इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इनमें प्रेजेंट होता है ट्यूबुलर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटोनेफ्रेडिया आर नोन एज अब प्रोटोनेफ्रेडिया प्रेजेंट होते हैं। किसमें होता है? फ्लैमसेरिया, प्रोटोनेफ्रेडिया, प्लेटिहेल्मिन्थेस, रोटिफर, सेफेलोकॉर्डेटा एंड सम एनालिडा एंड एम्फैक्सिमा। हमारे बड़े किसमें प्रेजेंट होता है? प्रोटोनेफ्रेडिया। तो प्रोटोनेफ्रेडिया या फ्लैम सेल्स आर प्रेजेंट देयर
एम्फाइक्सीमा, रोटिफर, रोटिफर सिफासम वर्टिब्रेटा और प्लेटिहेल्मिन्थेस cephalochordata and some annelida present होता है. ठीक, excretory flames also present in the flatworms जैसे कि प्लेनेरिया फ्लैट से जैसे कि प्लेनेरिया प्रेजेंट होते हैं. रोटिफोर्स एंड सम annelida and cephalochordata and amphiximas and some annelida में प्रोटोनेफ्रिडिया पाई जाती है. ये क्या करती क्या है, जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं ना हमारे बॉडी में, उनका बस दो काम होता है. फर्स्ट वर्क होता है कि ये हमारे बॉडी को क्या करे, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना. ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं. ऑस्मो रेगुलेशन से हमारे बॉडी को ये मेंटेन करते हैं. एंड सेकेंड काम होता है कि ये जितने भी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बने हैं उसको बाहर निकालना थ्रू आउट बॉडी. तो इसमें जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम पढ़ेंगे इनका भी दो ही काम होता है, या तो वो हमारे बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करेंगे या फिर हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल बने उसको बाहर निकालते हैं. ये वाला ही करते हैं. तो ये करती क्या है कि प्रोटोनेफ्रिडिया इज द प्राइमरली कंसर्न विथ आयरन एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन करती है. ठीक, फर्स्ट एग्जांपल में दे रहा है कि फर्स्ट काम इसका है ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है. एंड एंड सेकेंड आता है नेफ्रिडिया. नेफ्रिडिया आर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. यहाँ प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल के बारे में ये नहीं बताया, फ्लेम सेल बोला है. ठीक, वहीं पे जो नेफ्रिडिया है उसको बोला है कि एज अ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन. तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया और फ्लेम वो क्या बोलते हैं कि मेलपिगियन. बट यहाँ पे नेफ्रिडिया का एक स्पेशल टर्म लिखा है. जो नेफ्रिडिया होता है ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है. ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इज नोन एज नेफ्रिडिया प्रेजेंट होती है. अब नेफ्रिडिया मिलती कहाँ पे है, तो नेफ्रिडिया तुम्हारी प्रेजेंट होती है अर्थवर्म में, जो कि एनसीईआरटी मत अगर एग्जाम्पल है. ठीक है, एंड अदर एनिलिडा में सब एनिलिडा में प्रेजेंट होता है तुम्हारा प्रोटोनेफ्रिडिया, पर मोस्ट ऑफ द एनिलिडा इज प्रेजेंट ऑफ नेफ्रिडिया एंड अर्थवर्म. नेफ्रिडिया एंड अर्थवर्म में क्या प्रेजेंट होता है तुम्हारा नेफ्रिडिया. और नेफ्रिडिया इज प्रेजेंट इन किसमें, अर्थवर्म में, एंड मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स में प्रेजेंट होता है. ये कैसा होता है, इट वाज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये कहते हैं दे हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट. फर्स्ट वर्क जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट टू रिमूव द नाइट्रोजन वेस्ट, हमारे बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करते हैं. एंड मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड्स, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं. ऑस्मो रेगुलेशन या एनिंग बैलेंस को ये मेंटेन करते हैं. एंड मेलपिगियंस ट्यूब्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. मेलपिगियंस tubules, tubules. Malpighian tubules are the excretory structures of most of the insecta, included cockroach. Most of the structure. यहाँ से क्वेश्चन अगर बनाए तो ये बन सकता है कि क्या Malpighian nelica are present in all insecta? No. Malpighian nelica is not present in all insecta, but it was present of most of the insecta. ठीक, Malpighian nelica present in most of the insecta, included cockroach, जो कि हमें इंसेक्टा में पढ़ना भी है. Malpighian tubes to remove of nitrogen waste and ऑस्मो रेगुलेशंस. मैंने बोला था कि जैसे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उनका दो ही काम होता है, या तो वो हमारे बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन में बनाए रखें, फिर या तो ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखें, या तो फिर हमारे बॉडी को एक्सक्रीटरी फंक्शन के रूप में, एक्सक्रीटरी मल्टीपल के रूप में होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है. ठीक,
एक्सक्रीटरी फंक्शन एंड सेकेंड अब लास्ट आता है एंटीना ग्लैंड. एंटीना एंटीना तो ग्रीन ग्रीन एंटीना ग्रीन एंटीना एंटीना ग्रीन ग्रीन एंटीना एंटीना ग्रीन. ठीक है. फॉर्म्स एक्सक्रीटरी फंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है गाइस? क्रिस्टेरियस, ब्राउन एंड क्रैब. क्रिस्टेरियस इज द सब क्लासेस ऑफ वहाँ पे मोलस्का. मोलस्का का सब क्लासेस प्रेजेंट होता है, उसको क्रिस्टेरियस कहते हैं. क्रिस्टेरियस में प्रॉन एंड क्रैब्स आते हैं. इनमें क्या पाया जाता है? ग्रीन एंटीना पाया जाता है. मतलब ग्रीन ग्लैंड एंड एंटीना ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ग्रीन ग्लैंड और एंटीना ग्लैंड प्रेजेंट होता है. इट वॉज प्रेजेंट ऑफ प्रॉन एंड क्रैब. ग्रीन ग्लैंड एंटीना ग्रीन एंटीना यहाँ पे प्रेजेंट क्रिस्टेरियस में. क्रिस्टेरियस में क्रिस्टेरियस लाइक अ प्रॉन एंड क्रैब प्रेजेंट होता है. एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में ह्यूमन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पता है. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखेंगे फर्स्ट ह्यूमन्स excretory system. In humans, the excretory system is consists in two pairs of kidney, one pair of urethra, two pairs of kidney, and वहाँ से निकलती है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है. उस वेसल्स को कहते हैं यूरेट्रा. यूरेट्रा इज नॉट अ सीधी, इट वाज अ बेंड. ब्लड्स फिर यूरेट्रास आते हैं तुम्हारे यूरिनरी ब्लड में. यूरिनरी ब्लड से निकलते हैं यूरेट्रा. यूरेथ्रा कहते हैं. एंड यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर निकलते हैं. सिंपल सा है. किडनी कैसे होते हैं? किडनी आर रेडिश ब्राउन्स. ठीक, रेडिश ब्राउन प्रेजेंट होती है. इसका कलर कैसा होता है? सिचुएटेड बीन्स shaped structures means that the structures are situated between the levels of last thoracic and T12 and third T12 and L3, last thoracic and third lumbar vertebra. Okay, third lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. Anterior, posterior ventricle and dorsal wall of abdominal cavity. It was situated on dorsal walls of abdominal cavity. Where is kidney situated? Kidney was situated in dorsal, anterior, posterior ventricle and dorsal sides of abdominal cavity. Abdominal cavity के dorsal side present है. abdominal cavity kidneys के पीछे की तरफ होती है. तो इसके देखो kidneys present of inner wall of आंतरिक inner walls T12 and L3. T12 thoracic, T12 and lumbars third lumbars of vertebra. Third lumbar of vertebra close to the dorsal inner wall, to close to dorsal inner walls of the abdominal cavity. And each kidney have adult in 10 to 12 centimeters in a length. किडनी की लेंथ कितनी है? 10 to 12. ब्रेथ कितनी होती है? 2 to 7. एंड थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस 2-3 होती है. 2-3 सेंटीमीटर थिकनेस. एंड एवरेज वेट्स ऑफ किडनी 120 to 150 ग्राम्स. 120 to 170 ग्राम प्रेजेंट. 120 to 170 grams present होती है. It's towards the center of the inner concave surface toward the inwards. एक किडनी का स्ट्रक्चर देखिए ऐसे होता है. ये इसका बाहरी सरफेस होता है तो इसको कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं. एंड टूवर्ड द सेंटर की तरफ कॉन्केव टूवर्ड द सेंटर. जहाँ पे सेंटर होता है वहाँ पे ऐसे कॉन्केव सरफेस प्रेजेंट होती है. कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी ऑफ नोज. कॉन्केव सरफेस होती है जहाँ पर तुम्हारा यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लडर्स एंड क्या निकलता है? यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लडर्स एंड नर्व्स इंटर through which ureters, blood vessels and the nerves enters. ठीक, inner to the hilum. It is the boards funnel like cervical mechanism. and the hilum की जस्ट तुम अंदर जाओगे ना तो वहाँ पे बोर्ड्स लाइक एक
चौड़ा है, बोर्ड्स बोर्डेड, तो बोर्डेड फनल लाइक, फनल शेप्ड, फनल शेप्ड शेप प्रेजेंट होता है, वो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं तुम्हारा रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस just enter the highlands. We found just enter the highlands. We found out both the funnel-like structures we known as pelvic, renal pelvics, with projected with chylus, chylus with projected projections, एंड उसके प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको साइलस कैलस कैलस बोलते हैं, एंड प्रोजेक्शंस आर रीनल पेल्विस इट्स नोन एज कैलस. And the renal pelvis is the projections. Renal pelvis with projections called calyx. Renal pelvis with the projections called calyx present. And the outer layers of kidney is and how many layers are present in kidney? Kidney में 3 layers present होते हैं. ठीक, सबसे बाहरी वाली लेयर कहते हैं रीनल्स, रीनल एक मिनट आई विल मिस. सबसे बाहरी लेयर होती है जो टफेस्ट लेयर होती है, जो टफेस्ट होती है तो रीनल कोलेजन, रीनल कोलेजन. फिर उसके अंदर होती है तो वो प्रेजेंट है रीनल एडिपोस. बीच वाली जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं रीनल, और बीच का रीनल एब्डोमेंस एडिपोस, रीनल एडिपोस. सबसे अंदर वाली जो लेयर प्रेजेंट होती है मैं भूल गई. एंड किडनी देयर आर 2 zones, outer cortex and inner medulla present. So the medulla is divided into few conical masses. Few conical masses present. जो medulla present होते हैं, medulla are a few conical cone-like structure present होते हैं. It's called a medulla. Medullary pyramids. Cone-like masses is known as a medullary pyramids. वहीं पर the projections, projectings जो जितने भी कोन लाइक मासेस होते हैं मेडुलरी प्रेजेंट, तो इट वाज अ प्रोजेक्शंस. कहाँ पे प्रोजेक्शन होते हैं? इट वाज अ प्रोजेक्शंस ऑफ अ प्रोजेक्शन इनटू द कैलस. इट वाज अ प्रोजेक्शंस जो मेडुलरी इज, इसको कैलस कहते हैं. पेल्विस ब्रॉडलाइज प्रोजेक्शंस इन अ कैलिस मेडुलरी पिरामिड होते हैं जो कि बेस एंड एपिक्स, एपिक्स जो प्रेजेंट होता है वो आके जो था वो projections of a cylus and the cortex extend into between some कुछ पार्ट cortex का पेडुलरी पिरामिड्स के बीच में था, तो उसको कहते हैं the renal columns. इसका column of Bertini known as renals. It known as columns. It known as the pyramids. Pyramids as a renal columns is called a column of Bertini. Each kidney has a each kidney per kidney present of 1 million complex tubular structures is known as a nephrons. वहाँ पे each kidney लिखा है, each kidney है, तो nearly 1 million complex tubular structures are called nephrons. Which are the functional unit? What is the functional unit of kidney? The functional unit of kidney is known as a functional unit of kidney is known as nephron. Nephron present होते हैं, nephron present होते हैं. The glomerulus and the renal tubules, 2 parts of glomerulus, and each nephrons have 2 parts. जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट पार्ट तुम्हारा प्रेजेंट होता है इस नोन एज अ ग्लोमेरुलस, एंड ग्लोमेरुलस
other parts is called renal tubules. हमारा नेफ्रॉन्स दो पार्ट्स मिलकर होता है, एक बनता है कंडेंसिंग पार्ट होता है जो उसको रीनल पैल्विस कहते हैं, एंड ये जो कंडेंस पार्ट होता है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, एंड जो अंदर पार्ट्स ऑफ ट्यूबुलस, renal tubulus and glomerulus. Nephrons में दो पार्ट्स होते हैं. Nephrons is made of glomerulus plus renal tubules. Glomerulus are a tuft of capillaries. Renal क्योंकि capillaries stuffy of capillaries. First question: what is glomerulus? Is it tuffy parts of capillaries? Yes, glomerulus is the toughest parts of capillaries. Tuffy parts of capillary. G. C. Glomerulus is the tuffy parts of capillaries. Glomerulus is the tuffy parts of capillaries and formed by afferent arterioles. And it was a form of afferent arterioles. And it was a form of afferent arterioles. It was a form of afferents. And glomerulus, how do glomerulus met? Glomerulus is made of glomerulus method कैसे है? Is the tuffy parts of capillaries is formed by the afferents of arteries. काग कैसे कैपिलरीज के टफी पॉड्स से तुम्हारा बनता है. टफी पॉड्स कौन बनाता है? एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू क्या बनता है? एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू हमारा बनता है ग्लोमेरुलस. गैग प्रेजेंट होता है. द फेस पार्ट्स ऑफ glomerulus is a toughest of a capillaries formed by afferent arterioles. Is a fine branches of renal arteriole. Is the fine branches of renal arterioles. It was a fine branches of renal arterioles. It was a fine branches of renal arterioles present in the tuffy parts. Glomerulus is made of the tuffy parts of capillaries and capillaries are formed by afferent arterioles present होते हैं and are fine branches of renal arterioles. Is the fine branches of renal veins. No, it is fine branch of renal arterioles. Blood forms the glomerulus. Glomerulus is carried away from by efferent arteries. and glomerulus से जो सारे ब्लड निकलते हैं वो कौन लेके जाता है? वो उसको लेके जाता है efferent. पहले efferents वो कंडेंस हुआ कैपिलरीज फॉर्म में कंडेंस होने के बाद वहाँ पे fine branches of the renal artery के थ्रू वो लेके गया. ठीक है. And the blood forms the glomerulus is carried away from by efferent arterioles. The renal tubular veins with a double-walled cup-like structure. जो renal tubules present होते हैं. Renal tubules, it was a double-walled of cup-like structure present होती है. Cup-like structure present होते हैं called Bowman capsules. Bowman capsule is the cup-like tubular structures and it is forms of double capillaries present. इसमें डबल लेयर होती है. डबल लेयर में प्रेजेंट होती है तुम्हारे ये क्या बोलते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू ऑफ फॉर्म्स होते हैं स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. एंड Bowman's capsule which includes glomerulus which includes the glomerulus along with the Bowman capsules. It is called Malpighian. Glomerulus along with Bowman capsules. Glomerulus plus Bowman capsules form up a Malpighian tube. Malpighian body are renal capsules.
capsules. Male begins body. Male begins body and renal capsule present. Male begins body is and renal capsules present. Glomerulus along with Bowman's capsules. Glomerulus along with Bowman's capsules is called the male begins body. So called male begins body present with the glomerulus along the woman's capsule is called the male begins body or male begins body as the other name of the renal capsule present with the tubulars containing further the tubules containing further to the highly coiled networks is called proximal convoluted tubules. Highly coiled networks is called proximal. It is called highly coiled convoluted tubules is called proximal convoluted tubules. एफरेंस also कैपिटल इसको कॉल्ड होता है इसको कॉल्ड होने के कारण इसको बोलते हैं एफरेंस आर्टरीज एफरेंस आर्टरीज glomerulus एक women's capsules and proximal convoluted tubule. PCDs ascending limbs contains the highly coiled tubular regions. The high coiled tubular regions present DCT and PCTs दोनों जो structure present होते हैं highly coiled structure present होते हैं दोनों ही highly coiled structure present and DCT of many nephrones. PCT of many nephrones opens in the straight tubes open into straight the renal spandex. Renal bundle. So tubules are categorized minor calyx, minor calyx, कई minor calyx major calyx होता है major calyx होता है renal calyx और renal calyx happens into renal calyx through medullary pyramids in which calyx medullary pyramids into calyx present into calyx present pyramids in calyx present to the Malpighian scarp cells. The Malpighian scarp PCT and PCT of the nephrons are situated. Now the nephrons are situated in the corticals. Malpighian capsules. इसमें दो पार्ट्स प्रेजेंट होता है एक होता है तुम्हारा Malpighian होता है डिस्टल कॉर्टेक्स पार्ट होता है एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी पार्ट होता है कॉर्टेक्स पार्ट प्रेजेंट होता है एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी पार्ट प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स पार्ट एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी कॉर्टेक्स पार्ट से सबसे मेन पार्ट जो होता है कॉर्टेक्स होता है इसमें मैक्सिमम 70% ऑफ जितने भी उसका फॉर्मेशन 70% से अधिक फॉर्मेशन वहाँ पे होता है और जो एक्स्ट्रा मेडुलरी होता है बहुत ही कम पार्ट में होता है तो उसमें जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट्स में ज़्यादा कॉर्टेक्स की तरफ होते हैं इसमें ये लूप ऑफ हेले लगभग ना के बराबर और उपस्थित होता है लगभग ना के बराबर प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर जो बहुत सारे एक्टर होती है इट वाज प्रेजेंट बहुत सारे एक्टर बट बहुत सारे एक्टर शिवम हाय शिवम शिवम
सुनाई ना देता तो क्या? ओए बंद कर दे मोबाइल यार, फोन तो बजा दी। अपन लगाओ तो लेके सूता का, ठीक है? क्या बंद कर देता है? It opens. So इसका collecting stuff. So it's using of which converts into the renal pelvis and shows them the pelvis pyramids and the company and pyramids and the pelvis the materials capsules capsules उसको क्या कहते हैं? materials capsules renal capsules materials body and renal capsule present in the body and renal capsule present होता है bodies और capsule present होते हैं begins body और renal capsule present होता है begins body और renal capsule present होता है bodies और renal capsule present होता है begins body और renal capsule present होता है begins body और renal capsule present होता है straight lines to use collecting toxic and then all which converts which converts and opens to the renal pelvis and open to through medullus pyramid and the pelvis and the medullary pyramid capsules and begins body capsules yeah bodies renal capsules is visible and nasal is also situated in the cortex region of the kidney. कौन your membranes tubules like begins bodies PCT TCT and the nephrons of the nephrons are situated in the cortex region kidney in a loop of Henle and deep into the medullus. The majority of the nephrons in the loops of Henle is two sorts and extended only a little amount of medulla. cortex nephrons के बारे में बात करता है cortex nephrons the very small process nephrons are called cortex nephrons presented in some of the nephrons loop of Henle is very long and run deep into the medulla. This nephrons is as a juxtamedullary nephrons and efferent artery emerges from the glomerulus. Efferent artery emerges from the glomerulus from a fine capillary networks around the renal tubules. The efferent arteries emerging from the renal form emerging from the glomerulus from a fine capillary network around the renal tubules is formed by peritubulous capillaries. Peritubulous capillaries का formation तुम्हारा करती है efferent arterioles. Efferent arterioles emerging from the glomerulus from a fine capillary network. Fine capillary network present होता है. Fine capillary networks present होता है and it was around the renal tubules. renal tubules क्या होते हैं? renal tubules क्या नाम present percentage it was presented of a renal tubules. It was a percentage of a renal tubules present. It was presented of renal tubules is called तुम्हारा क्या पता? It was a called peritubulous capillaries. It was called peritubulous capillary formation कौन कहता है? efferent arterioles. ये fine efferent arterioles होते क्या है? efferent arterioles are the fine structures of capillaries and capillaries go to the renal tubules.
ब्लड ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके आसपास ऐसा मतलब ब्रांच नेक्स्ट जगह होता है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने के कारण यहाँ पे इसका फॉर्मेशन करते हैं पेरी ट्यूब्यूल्स कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है minute vesicles of networks is run through the parallels of the blood vesicles. Some of these networks run parallel to the loops from a user's vasectomy is absent or highly reduced. Vasectomy is absent. या तो vasectomy absent हो या highly reduced the cortical nephrons में कार्टिकल्स नेफ्रॉन में या तो होगी नहीं या तो हाईली रिड्यूस इन कार्टिकल नेफ्रॉन्स लूप में प्रेजेंट होता है वो हल्के प्रेजेंट वासारेक्टम इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूसिंग कार्टिकल्स नेफ्रॉन्स कार्टिकल्स नेफ्रॉन्स यूरिन फॉर्मेशंस in blood three processes of glomerular filtration, reabsorption and secretion करनी है बॉडी ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं वाली है taking place in the differential part of nephrons. The first part in the urine formation is that filtrate of a blood. First steps of a urine formation is filtrate of blood is carried out by the bronchus is called glomerulus filtration. Average of gases is 1200 ml. Gases is 1200 ml blood filtrated by the kidney per minute. 1200 से 1100 ml bloods are purified. 1200 से 1300 blood purified. Is purified by kidney per minute and is consistent. The blood purify करते हैं पर तो उसका 1/5 पार्ट सब purify per minute filtered body is filtered by the kidney per minute and which consists roughly 1/5 pounds of blood pumped up from the ventricles heart and the ventricles heart and in the ventricles heart and in a minute the glomerulus capillary is present in causes of filtrates of blood in through 3 layers of blood vessels are 5 blood epithelials open capsules and the moving capsules are podocytes arranged into mammals so as leaves some minutes basically kind of filtrate some in the slight exposure slight exposure the blood is filtered so finds through the nutrients the almost all the concentration of the plasma fluids proteins out onto the forming capsule. Therefore, is considered as the process of urine formation. It was the process of urine formation. The amount of fluids formed by the kidney, the amount of fluids formed by the kidney per its kidney forms is called as shiver. Healthy individuals is approximately 25 ml per minute. 25 ml per minute या 180 लीटर per day. 80 लीटर per minute per day. लेकिन
present in a list of words of नहीं उसके epitheliums कुछ कहीं मॉडिफाई होते हैं कुछ कहीं मॉडिफाई फॉर्म्स सेलुलर मॉडिफिकेशंस ऑफ पेडिसिटी जो जेजी से प्रेजेंट होते हैं जेजी से it was the modifications of modification formed by the cellular modification the distinct completed tubules and afferents arterioles to afferents arterioles to the locations of their contacts of these contacts present profiles of GFRs जब GFR कम होता है यानी BP कम होगी then activity of cell this table sodium आयन के लिए बहुत है सेंसिटिव होता है चेक करता है चेक करता है नहीं होता है तो वहाँ पे एक सेल होता है लेसोसेल उसको करता है लेसोसेल एक्टिव फॉर्म जेजी सेल जेजी उनके इंस्ट्रूमेंटेड ब्लड ग्लोमेरुलस and therefore injections can renin released from renin को जगह जेजी सेल कहाँ से रिलीज करती है it was a release to the first third layer से आता है a compressed of volumes of filtrate comparisons of volumes of filtrates formed per day 680 liters per day present 680 liters per day present by American the healthy GFR healthy person का GFR आता है healthy person का GFR 150 ml per minute होता है 180 लीटर per day present a falls in a GFR can activate the JG cell to release renin with can stimulates the glomerulus it can stimulates the glomerulus can stimulate glomerulus blood flow and thereby the GFRs back to a normal present the critical volumes of filtrates formed per day so liters per day present with that of urine released 1.5 liter later it is supposed by the 99% of filtrate has to be absorbed by the renal tubules के द्वारा इनको reabsorb कर लिया जाता है this process is called reobservations tubules renal tubules the tubules epithelium cells is in a different segments of nephrons found this either by actively or passively mechanism for example substance of glucagon and negative glucose और अमीनो एसिड्स नाक एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है अमीनो एसिड्स इन ग्लूकोज by activity observations hydrogen based are absorbed by passively transports hydrogen based passively transport observations of what also occurs observation of what also occur passively into the initial segment of nephrons during urine formation replication through the cell substance during urine formation tubular secretions substance like iron into the filters tubular secretions most important steps are tubular secretion tubular secretion is also an
important step. Urine formation as it helps. It is a maintenance of tubular secretion. Tubular secretion. Tubular secretion is the main cause of incontinence state in urine formation. Help in the maintenance of many acids and base. Balancing of body fluids. Fluids. Peroxide completed simple PCD were lining by simple throughout plus simple product. PCD. Particles plus increases in the surface area of tree observations. Tubular present to the tubular surface water. PCD में प्लस वाटर लेते थे प्लस वाटर लेते हैं कि अगर उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं सरफेस एरिया बढ़ जाती है तो उसके द्वारा ये ऑब्जर्वेशन कर देते हैं क्यों बढ़ाती है क्योंकि आंसर्स को पुनः ऑब्जर्व करना है तो ये ऑब्जर्वेशन करती है are absorbed by the